Very nice morning and warmest greetings to you, my students, dearest students. Back again for the session second. कल की बातें जो हमने पूरी की, वेट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वेट्स. आज काफ़ी बातें पूरी करते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए आप लोगों के साथ. भाई एक अलग अप्रोच से निकले हैं बात को समझने के लिए. इस सब्जेक्ट को आसान और बड़ा लवेबल करने की कोशिश में मैं भी हूँ. एंड as we know that you have to put all your efforts in understanding this. It is not important how much we know, friends. It is important how much you can do in that given frame of time. We are into time-bound exams. You have to be very thoughtful. You have to be very decision-taking. Because this is time frame examinations, मेरी कोशिश है, आपकी मेहनत है, they will nicely combine and you will correct the examination very nicely. All the luck. Proceeding further. Yes. Session. We are talking about basic concepts. Of course, physical and inorganic chemistry. नॉट ऑफ ऑर्गेनिक राइट नाउ. जितनी ज़रूरी बातें हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका हम सेशन सेकंड आगे बढ़ाते हैं. वी सॉ एटॉमिक वेट्स, वी सॉ मॉलिक्यूलर वेट्स. ये अब तक की बातें थी सो फार. थोड़ा वर्बली बोल लूँ, 1 मोल से रिलेटेड है, इट इज ग्राम पर मोल. ये भी बातें थी. एटॉमिक वेट्स आर कांस्टेंट. मॉलिक्यूलर वेट्स आर मेड बाय समेशन ऑफ एटॉमिक वेट्स. ये सब बातें थी. चलो, तो ये सेशन 1 में हमने देखा सो फार. आगे बढ़ाते हैं. अब मैंने जैसे कहा था कि वो पहला लेक्चर था, पहला सेशन था, थोड़ी सी इधर उधर की बातें हुई. अब ज़्यादा मैं फोकस्ड रहूँगा, बिल्कुल आपको ज़रूरी चीज़ें कैटर करते रहूँगा. चले कंटिन्यू. अब आगे. यस, एटॉमिक वेट, ये 1 मोल एटमों का वेट है. एटॉमिक वेट ऑफ an element is the mass of its how much? 1 mole atoms. 1 mole मैंने समझा दिया है, 6.022. इसलिए यूनिट ग्राम्स पर मोल बनता है. हमने ये भी बात की थी कि molecular mass is again weight of 1 mole only, but इसको molecules कहते हैं. लेकिन एक बात अच्छी नोट करो, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि सर कभी मॉलिक्यूल बोलते हो, कभी कंपाउंड बोलते हो. एक बात याद रखो, नोट एंड remember, a compound can be called a molecule, can be called a molecule. जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स रोज बोलते हैं स्टडीज में. कंपाउंड कैन बी कॉल्ड a molecule. लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है, बट जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है, रिमेंबर, इसको हमने एग्जाम्पल दिए हैं जैसे O2, N2, Cl2, P4, S8, O3. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं can never be called the compounds. It's a very simple understanding. इसलिए now onward, compounds can be called a molecule. Water molecules, H2SO4 molecules, calcium carbonate molecules, nitrogen dioxide molecules, although they are compound, but we call it molecules.
बट जो मॉलिक्यूल्स हैं सिंपल O2 and they are molecules only. So we have defined it as simple molecules and compound molecules. That makes a sense. तो उसमें जो summation of atomic mass है वो लास्ट टाइम हमने देख लिया है. नो नीड. वी आर proceeding further. Let us see what it is. Molecular mass जो है या molecular weight जो है can also be defined and calculated by different ways, by different approach. Value will come same, different approach also. बताता हूँ, it's coming up, धीरे धीरे आएगा. लेकिन मैंने यहाँ एक वन लाइनर दे दी, नॉलेज दे दी. रिमेंबर, जैसे कि एज पर एग्जाम्पल मैं समझा नहीं रहा हूं लेकिन दे रहा हूं कि अबाउट गैसेस, फॉर गैसेस, रिमेंबर फॉर गैसेस वेट ऑफ इट्स 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम कब एट STP, आगे आ रहा है सब कुछ, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. ये जो STP है इज ऑल्सो इट्स मॉलिक्यूलर वेट. देखिए अप्रोच बदल गया, इज मॉलिक्यूलर वेट. वैल्यू विल कम सेम. एज पर एग्जाम्पल CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम्स है पर मोल. तो इसका इट्स वेट of 22.4 liters volume at STP also will be 44 grams only. So likewise there are many other approaches for molecular mass. इसका गुड वर्ड है मोलर मास. आगे चलें. नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग. कॉन्सेप्ट वेट कंटिन्यूड है. सेशन 2 शुरू हो चुका है. विल सेलिब्रेट द नॉलेज टुगेदर. लेट अस सी व्हाट इट इज. नेक्स्ट वेट कॉन्सेप्ट इज इक्विवेलेंट वेट. Equivalent weight. This is useful at many things, at many point in numericals. Equivalent weight. Okay. चले. This also is calculated with different approach. Various approach. As per topic, as per the issue, as per the subject, as per the concept, whatever you call it. बात शुरू हो चुकी है, बात आगे बढ़ चुकी है. We call it as equivalent weight now. चले. Okay. पहला तरीका for elements. As per subject मैंने कहा सब्जेक्ट एलिमेंट है. एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट यूनिट वो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को अलग बताने के लिए इससे ये ग्राम इक्विवेलेंट ऐसा लिखना है. दिस इज यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट वेट. चले. फॉर्मूला उसका एटॉमिक मास ले लो और उसकी वैलेंसी ले लो. दैट्स ऑल. ये आपका बन जाता है इक्विवेलेंट वेट फॉर एन एलिमेंट. सो सिंपल. एटॉमिक वेट अपॉन इट्स वैलेंसी मेक्स इक्विवेलेंट वेट. तुरंत एग्जाम्पल्स ले लें. एल्यूमिनियम की बात करें, 27 एटॉमिक मास है, वैलेंसी 3 है. विदाउट साइन, नो साइन नहीं लेनी है वैलेंसी की.
ओनली वैल्यू, या यूं लिखो ओनली वैल्यू, दैट्स बेटर. साइन मत लीजिए प्लस माइनस. सो इट इज 9 ग्राम इक्विवेलेंट, दैट्स ऑल. तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 ग्राम है. आगे भी 2-3 अलग अलग अप्रोच से सीखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो भी वो 9 ही आने वाला है दोस्तों. आगे चले. कैल्शियम का इट इज 40 ग्राम्स एटॉमिक मास, वैलेंसी +2 है, सो इट इज 20 ग्राम इक्विवेलेंट, लाइक दिस. ऑक्सीजन इट इज 16 ग्राम, वैलेंसी 2 है, हालांकि -2 है, बट वी डोंट टेक द साइन, वी टेक ओनली वैल्यू, सो इट इज 8 gram equivalent. Remember, hydrogen it is 1, valency 1 only, so it is 1 gram equivalent. Likewise, chlorine it is -1, 35.5 gram is atomic mass, valency is -1, we don't take sign, it is 35.5 gram equivalent, is equivalent weight of, basically it is gram. इक्विवेलेंट थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लगा दिया है. कोई भी वजन आखिर में वो वजन का यूनिट रहेगा. सो इट्स ग्राम. एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, इक्विवेलेंट मास हो, इज ग्राम, रिमेंबर. सो ग्राम इक्विवेलेंट. क्लोरीन लाइकवाइज यू टेक एनीथिंग. नाउ यू आर क्लियर. सिल्वर की बात करें, सिल्वर इज +1, 108/1, इट इज 108 ओनली. लाइकवाइज टेक जिंक, वैलेंसी इज +2, it is 65 atomic mass upon 2, it is 32.5 gram equivalent. I suppose it is more than sufficient. It's more than sufficient. Likewise, एक और ले लेते हैं भाई, 30, this is 63.5 for copper, yeah, upon valency is 2. If it is cupric की valency 2, and then accordingly whatever 32.75 gram equivalent. Likewise, you understand this. समझ में आ रहा है ना. तो दिस इज वन अप्रोच. टॉपिक क्या हो, अगर बातें अगर एलिमेंट्स की चल रही है. इक्विवेलेंट वेट फॉर एलिमेंट्स, फॉर्मूला इट्स एटॉमिक मास, एवरी एलिमेंट हैज फिक्स्ड कांस्टेंट यूनिवर्सल एटॉमिक मास, यू नो दिस. वो लेकर के वैलेंसियां भी 1 2 3 छोड़ दो तो वेरिएशन नहीं है, फिक्स है. ओके, आगे चले. बात अगर इक्विवेलेंट वेट, बात अगर एसिड और बेस की चल रही हो, एसिड्स एंड बेस, यस, बात अगर एटॉमिक ये एसिड्स और बेस की चल रही हो, चलो वेरी सिंपल. फॉर एसिड्स क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ले लो और H आयन की संख्या ले लो, नंबर ऑफ H आयंस, दैट्स ऑल. एसिड्स का मतलब हाइड्रोजन आयंस. सिमिलरली फॉर बेस फॉर्मूला बन जाती है, उस बेस का मॉलिक्यूलर वेट ले लो अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस. बेस होता है OH- आयन से, सो नंबर ऑफ OH- आयंस. एप्लीकेशन देख लो यार. HCl की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट आपको आ चुका है अब 36.5, हाइड्रोजन की संख्या 1 है. H2SO4 की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट ढूंढना आसान है. मैं उस प्रकार से पढ़ाते जाऊंगा कि आपको कहीं गैप नज़र नहीं आएगी कि सर ये कहाँ से आया और वो कहाँ से आया. दैट इज़ व्हाट आई हैव डिजाइंड द अप्रोच एंड अंडरस्टैंडिंग. You will love the subject one day. Very soon that moment is coming. 98, hydrogen is 2, it is 49. Like this, unit वही लगा दो, 36.5 यूनिट वही लगा दो. ग्राम इक्विवेलेंट अब वो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्राम भी लिखोगे तो चलेगा. ग्राम इक्विवेलेंट इट इज़ लाइक दैट. कुछ भी आप कुछ भी ले लीजिए. HNO3 ले लीजिए. HNO3 इज 63/1. देखिए ना, ये 48, ये 14, ये 1, ये 13, ये 63. सो इट इज 63 ओनली ग्राम इक्विवेलेंट. ओके, सो दिस इज फॉर एसिड्स. एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट H आयन की संख्या तय करती है. द H आयन प्रेजेंट इन एसिड्स डिसाइड्स इट्स इक्विवेलेंट वेट. रिमेंबर,
Similarly, the hydroxyl ions present in base, alkaline, alkalinity is because of that OH minus ion. Acidic character, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, बड़ा इल वर्ड है, एसिडिक कैरेक्टर इज बेटर वर्ड, वो एच आयन तय करता है. सिमिलरली यहाँ ओ एच माइनस आयन तय करता है. ले लो ना एग्जाम्पल्स ले लो यार. NaOH है, रिमेंबर Na इज 23, O इज 16, सो इट इज 40. OH की संख्या H मत समझना, इट इज 1 ओनली, सो इट इज 40 ग्राम equivalent. 40 gram equivalent. Like this, you take anything, remember, whatsoever, aluminum hydroxide. Aluminum is 27, 16 3s are 48, it is 3, 15 और 3 18, ये 78 हो जाता है. So it is 78. Hydroxyl ions are 3, whatever, it is gram equivalent. Remember. So, equivalent weight दूसरे इश्यू के लिए इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द सब्जेक्ट. रिमेंबर, सब्जेक्ट अगर एसिड है तो उसका इक्विवेलेंट वेट HN से तय करो. सब्जेक्ट अगर बेस है, अल्कलाइन है, अल्कली है, रिमेंबर, तो उसका OH माइनस आयन से तय होता है डिवाइडेड बाय. आगे चले, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग. रिमेंबर, इक्विवेलेंट वेट टाइटल दीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल्स. मेटल्स, हाईलाइट द वर्ड मेटल्स. अगेन इन देयर कंपाउंड्स, उनके कंपाउंड्स में फिर वो ऑक्साइड्स हो, फिर वो क्लोराइड्स हो, फिर वो हाइड्राइड्स हो, फिर वो ब्रोमाइड्स हो, वगैरह वगैरह. बड़ी सिंपल सी बात है, बट फोकस इज मेटल. अब हमें पता है, नेक्स्ट पॉइंट, इसकी बातें समझ लो, वन लाइनर. हमें पता है, वी नो, मैं कह चुका हूं कि मेटल्स एलिमेंटल है. मेटल्स आर एलिमेंटल. दिस इज अनाउंस्ड अर्लियर ऑल्सो. इसलिए उनका एटॉमिक मास अपॉन मेटल की वैलेंसी, ये बन जाता है इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, किसका? मेटल का. वैलेंसी ऑफ मेटल, ओके, बन जाता है. दैट बिकम्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. I will again put example. This is aluminum becomes, aluminum is 27, it becomes upon 3, it is 9 gram equivalent. 9 gram equivalent. 9 gram equivalent is aluminum. Now, with different approach, made in the compounds, equivalent weight of metals in their compounds. Let's see. जैसे like in metal oxides. In metal oxides. Definition is, to understand formula, let us see definition. A weight of metal reacting, either you call it, or combining with focus these 8 grams. 8 grams is constant of oxygen. Oxide is an oxygen compound, is equivalent weight of, you only speak metal. That's all. I repeat, metal oxide is made up of M and O. So simple. M is metal, you understand? O is oxygen. M can be anything. Oxygen is fixed. कुछ भी मत बड़बड़ करना, बातों को समझना. मैं स्लो और धीरे धीरे बोल रहा हूँ, वक्त ले रहा हूँ, आपने आराम से समझना है, कोई घाई नहीं है. तो मेटल ऑक्साइड, यार मेटल ऑक्साइड इज मेड अप ऑफ व्हाट? मेटल एंड ऑक्सीजन. Metal can be whatever, but oxygen is fixed. So that combination is metal
Oxide. Okay. As long as oxygen is concerned, equivalent weight of oxygen is 8. We saw somewhere. Equivalent weight of oxygen is 8. 16 by 2, 8. Therefore, this 8 is fixed. 8 is fixed. Every time 8 will be fixed. So, weight of any metal you are considering. Weight of a metal combining with 8 grams of oxygen. Remember. So, let us see. As for example, calcium oxide. Calcium oxide. Example first. We know equivalent weight of calcium is 20. 40 upon 2. We saw. Here also it will come 40 only. Let's see how. You see how many grams it is? 16 grams. On oxygen. You can see this. I am going very slowly. This is 16 gram oxygen. 1 into 16. Agreed? That time, weight of metal weight is 40 gram. That also can be seen. Yes. 16 gram oxygen is combining with 40 gram calcium. Okay. Then as I said, fix is how much? 8 grams. I will write here also. It is fixed value, it is constant value. Whatever weight. So let's see. It is 40 into 8 upon 16. Did it come gram equivalent? Did it come same? Calcium upon valency, 40 upon 2. Otherwise also it comes 20. In case of compound approach, also it is coming 20. I think this secret you are understanding. Obey like that. तुम्हें ये feel हुआ कि अरे सही है. Like that. If you feel that अरे makes joyful. You know, calcium by its own valency value comes 40 upon 2, 20. In terms of oxide, also it is coming. Likewise, you will realize this miracle or simplicity. Value comes same. एक और example देता हूँ. Aluminium oxide. Example second. Chalo, focus is aluminium. You can see how much oxygen it is. It is 16 into 3 grams oxygen. You can see this. I repeat slowly. 16 into 3 grams oxygen. Aluminum oxide. Focus is oxide. So it is this much grams of oxygen. That time aluminium. It is 2 into 27 grams of aluminium. That is metal. What is fixed? 8 grams. तो 8 ग्राम्स के साथ जो कंबाइन होता है वो होता है उसका इक्विवेलेंट वेट. तो दोस्तों वो आने वाला है 2 इंटू 27 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 16. बनाओ 3 इंटू 16 बना के देखो आप. दिस बिकम्स व्हाट? बोलिए. सो इट इज 9. देखिए आप दिस it is 16 gone. It is 9 gram equivalent. Otherwise also the valency of aluminum is 3, so it is 27 upon 3 is 9 only, right? So it is likewise. अरे एक और ले लेते हैं, वक्त है जिंदगी में, एक और ले लेते हैं और उसकी क्या बोलते हैं उसको, ट्रूथफुलनेस तय करते हैं. जिंक ऑक्साइड जिंक वैसे इंडिपेंडेंटली 65 upon 2. Let's see here in terms of oxide. Here 16 gram oxygen. You can see this 1 into 16. Then it is 65 grams zinc. 65 grams zinc. Again 8 is fixed. Likewise it becomes 32.5
5 grams. So formula, can't you make formula? Yes, make formula. Instead of putting these kind of things, makes him happy. How? क्या आ रहा है? What is coming? What is coming? It is metal weight. Metal weight into 8 fix upon oxygen weight. Try out anywhere. Metal weight. ये. Metal weight into 8 fix upon oxygen weight. Oxygen 3 into this. Metal weight. How much? 65. So this is your yes. This is your formula in case of oxides. Are you feeling as if you are in classroom? मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे क्लासरूम में भी अटेंड कर चुके हैं, आई होप दे आर सेलिब्रेटिंग मी. और बाकी को मैं धीरे धीरे आपके लाइव क्लासरूम से भी ज़्यादा बेहतर सेशन बनाऊंगा. अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, साथ चलना है. क्लासरूम से भी बेहतर एंड मैं सदैव आपके साथ रहूँगा. ये व्यवस्था और ये उद्देश्य है. आप ये ले लीजिए, समझे. नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कीजिए, रीड इट एंड सेलिब्रेट इट विथ मी. फील मी इन योर हाउस, with you, in your minds, in your study, in your preparation. Remember, without being serious, seriousness is a crime. Don't be serious in living, in life, or in any responsibility. You have to be sincere. Sincerity includes seriousness. Seriousness is not necessarily will make you sincere. That can be a mask also. No, that can weaken you or that can escape you. Make you weak. So, second के बाद चलो इन मेटल क्लोराइड्स, बात फोकस मेटल ही है. वैल्यू विल कम सेम. वैल्यू विल कम सेम. मेटल क्लोराइड्स मैं इन जनरल लिखता हूँ MCl. M इज एनी मेटल, क्लोरीन इज इन जनरल. इन जनरल जरूरी नहीं है इसको NM कर सकते हैं, बट इट्स ओके. M and Cl. मेटल एनीथिंग, Cl इज फिक्स. थोड़ा कॉमन सेंस लगा दो यार. मैं कट शॉर्ट कर देता हूँ. डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे पता है. ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 था, इसलिए 8 फिक्स कर दिया. क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 upon 1 इज 35.5 ओनली. ओके, तो वही फिक्स हो जाएगा. सो इट इज मेटल वेट इंटू फिक्स 35.5 ग्राम, इसको फिक्स नाम दे दो, अपॉन क्लोरीन वेट या क्लोराइड वेट. दैट्स ऑल. दिस इज योर फॉर्मूला. समय बचाएगा. आई एम हियर टू टीच यू टाइम बाउंड अप्रोच, नॉट बड़बड़ एंड इलेबोरेशंस फॉर नो रीजन. चलो एक मैंने समझा दिया. वन आई अंडरस्टूड, एक्सप्लेन, यू अंडरस्टूड इट. चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं. इट इज AlCl3. खटाखट चले. हाउ मच मेटल वेट 1 into 27. हाउ मच फिक्स 35.5 is fixed. How much chlorine weight? Cl3 it is 35.5. So it is 9 again. See, अबे वापस आ गया वो यार. इंडिपेंडेंटली दो तो भी 9, ऑक्साइड में लो तो भी 9, क्लोराइड्स में लो तो भी 9 ग्राम इक्विवेलेंट. आप लिख लीजिए. आई विल नॉट राइट एवरी टाइम. यू अंडरस्टैंड. So can you see this, secret hidden? That makes happy. Things easier. Yes, equivalent weight of aluminium, whether it is oxide or chloride, it is coming same. It's 9. अरे और लेता हूँ मैं एग्जाम्पल्स. कौन सा लिए? जिंक क्लोराइड. जिंक क्लोराइड की फॉर्मूला ZnCl2. फोकस इज मेटल. चलो फॉर्मूला मेटल वेट इज 65. You can see this 65, 1 into 65.
Therefore, I took atomic weights in the very first session. Okay, fix is 35.5. Chlorine ZnCl2, 2 into 35.5. It is 32.5 gram equivalent to है. So independently also you see, it is 32.5 grams. Okay. Likewise, take no anything. Take no, yeah, you take anything. Or I have taken this calcium chloride. You only will stop me now. इतना आसान है कि सर रहने दो, समझ में आ गया. अब जब वो स्थिति आती है, when you say कि सर it's okay सर, आप भी चेटगिरी ना करो, तो that is the right status of your subject. But still मैं आपको पकाता हूँ एक बार और. 40 is metal, 35.5 gram is fixed upon 2 into chlorine. Chlorine is 35.5. It becomes 20 gram equivalent, etc. So simple. Yes. Let us go ahead. Third. So it is in metal chlorides. Next. In metal hydrides. Focus is metal. In metal hydrides, hydrides are hydrogen compounds of metal. MH कर दो, जय महाराष्ट्र. M is metal, H is hydrogen. जय महाराष्ट्र. Something like that. H is hydrogen. Hydrogen का equivalent weight, Ar 1 by 1, atomic mass 1, valency 1. So it is 1 by 1. So your fixed value also will be 1. है ना? चले. Yes. Now you only have become expert, I guess. Formula बना देते हैं. Focus of course metal है. Focus is metal. We are understanding equivalent weight of metals in their compounds. दादा क्या चल रहा है ये भी समझ में आना चाहिए. सुन रहे चंबू की तरह. ऐसा नहीं है. क्या चल रहा है, थोड़ा सा रिवर्स जाने का कि मैं क्या सीख रहा हूँ या मैं क्या सिखा रहा हूँ, व्हाटएवर. वो ये है सर, मेटल सीख रहे हैं हम दोस्तों. मेटल का इक्विवेलेंट वेट सीख रहे हैं हम. इंडिपेंडेंटली अपॉन वैलेंसी करते हैं, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. अब कंपाउंड में जब आता है, कंपाउंड ऑक्साइड हो गया, क्लोराइड हो गया, हाइड्राइड ले रहा हूँ, बट टारगेट इज मेटल. दैट्स ऑल. सो इट इज मेटल वेट into 1 is fixed upon hydrogen weight. That's all. Hydrogen mass, whatever you name, हो गई. This becomes your formula. Yes. Make it. चलो अपना वही एल्यूमिनियम हाइड्राइड. एग्जाम्पल्स. वापस 9 आएगा रे, वापस 9 आएगा. क्या मेटल कितना दिख रहा है? 27. फिक्स क्या है? 1. हाइड्रोजन कितनी है? 1 into 3 is 3. So it is 9 gram equivalent. My goodness. See how wonderful it is. 9 gram equivalent. Take anything you like. Anything. चलो, zinc hydride, ZnH2. Focus is zinc. Yes. How much it is? 65. What is fixed? 1. What is hydrogen here? 2 into 1, 2. So it is 32.5 gram equivalent. How nice. Equivalent weight. This was the issue. I hope बातें समझ में आ रही है और राज खुल रहे हैं दोस्तों. राज खुल रहे हैं. और ये आपने लेके रखा है. आप 25 बार सुनो ना यार, रिपीट करके घर में. यू ऑलरेडी हैव परचेज दिस, यू ऑलरेडी हैव बॉट दिस इन अ वेरी नॉमिनल अमाउंट. दैट ऑल्सो आई केप्ट वेरी लेस अमाउंट ऑन माई वेबसाइट. वेरी सून यू विल कम अप विद दिस वेबसाइट एड्रेस ऑल्सो. गो देयर, बाय दिस as good as no amount, like, so that it becomes economical for you.
No so-called expensive things. I'll keep a very small amount for your purchase of this. And advantage, it's with you. ऐसा नहीं है कि एक बार सुन लिया और अब सर फिर से बोलो ना. It is with you in your house, with you. A teacher forever, a perfect knowledge forever with you. If you forget, repeat number of times, hear number of times. This is a wonderful phenomena between you and me. So we'll walk together, we'll succeed together. Thank you. So this is all about equivalent weights we are talking about. One more approach. Yes, one more approach. So, here independently, acid base, element का हुआ. We saw element, we saw acid base, we saw metal independently dividing by valency, we saw compounds. Let's see. Next, ये मेरा NXT और NXT रहेगा. नेक्स्ट, एक छोटी सी बात मैं साइड में लगवा दूं, आप भी समझ लो. मैं NXT लिखा तो टॉपिक सेम और आगे, और मैंने कैपिटल में NXT लिखा तो इट्स ए न्यू टॉपिक. यार ये छोटा सा मेरा अंडरस्टैंडिंग आपके और मेरे बीच होना ज़रूरी है. मैं जब कैपिटल NXT लिखता हूँ तो समझ लेना वो टॉपिक ही बदल गया है, नया टॉपिक है. Capital NXT. When I write small NXT, it is same topic continued with whatever coming up. Please note this. कहीं जान लो ये बात. It's not so important, but sometime I'll write this, sometime I'll write this. You'll be confused कि यार ये आदमी का चक्कर क्या है. तो चक्कर ये है बाबू, ये कैपिटल NXT, न्यू टॉपिक, स्मॉल NXT, वही टॉपिक में next until it finishes. Good. Yeah, equivalent weight तो चल ही रहा है. देखिए मैंने small NXT लिखा है, means equivalent weight is continued. Agreed? So it becomes easy. ये symbolic तरीके हैं. Okay. वर्क जितना डिफाइंड है उतना आपको आसान लगेगी बातें. कभी ये कभी वो ऐसा नहीं होना चाहिए. और आई विल नेवर फाइंड मी फ्लंगिंग इन टॉपिक्स. नो, लेट अस गो स्टेप वाइज. एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग तैयार करनी है. उसके डायमेंशन अच्छे होने चाहिए. चलते हैं. लेट्स सी. यस, वन मोर वे फॉर मेटल ओनली in terms of liberated hydrogen gas. Okay, liberated hydrogen gas, equivalent weight. Good. For metals, again focus is metal, but हैंडलिंग ऑपरेटिंग टूल बदल गया है. हाइड्रोजन गैस हमने हाइड्राइड जरूर देखा. तो पहले इसकी डेफिनेशन जान लो. डेफिनेशन, वी नो स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल, नॉट ऑल, प्लस एसिड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस. यू नो दैट. मेटल्स नॉट ऑल. ये छोटी सी नॉलेज दे दी. ये अलग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. अक्सर मेजर नॉट ऑल बट मेजर मेटल्स रिएक्ट when heated with acids, liberates hydrogen gas. Everyone know this. Now, hydrogen gas volume in milliliter or liter or dm cube. ठीक है, whatever you need. Let's see definition. Weight of a metal, ठीक है, which can liberate, which can evolve, which can produce
लिबरेट वर्ड चल रहा है. हाउ मच यू नो? 22400 मिलीलीटर फिक्स. इसको आप लीटर में कन्वर्ट करो, डीएम क्यूब में कन्वर्ट करो, एक ही बात है. मैं ये लिख रहा हूं मिलीलीटर whatever और सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है. दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है. लेकिन कब? ऑन रिएक्शन विथ एसिड्स. therefore I give this fundamental. We know this. And remember also, if we were not knowing this so far, now remember, kabhi bhi, it's never late as long as learning is concerned. It's never late. Till last breath, it's never late. So, on reaction with acids, लेकिन कब पता है? At STP 273 Kelvin and 1 atmosphere pressure. This is STP. So, hydrogen gas evolved, hydrogen gas evolved, hydrogen gas evolved. Measure its volume. That becomes your. So, this is along with the numerical जब आएगा तब उसको लिया जाएगा, तब उसको समझाया जाएगा. But note down this definition. It is a numerical definition. Weight of metal. Remember, weight of metal. Suppose इसकी फॉर्मूला भी बना के देता हूँ. As for example, say 5 ml hydrogen liberates from 10 gram zinc on reaction with acid at STP. Like this. या whatever metal ले लो in general. That's all. तो क्या स्टेप रहेगा? स्टेप क्या रहेगा कि 5 ml हाइड्रोजन है तो कितना ग्राम मेटल दिख रहा है? 10 ग्राम मेटल है. समझो बात को. आई रिपीट, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, सो डू नॉट टेक इट एज फिक्स. नो, यस, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट आई पुट इट इन एग्जाम्पल फॉर्म. 10 ग्राम मेटल्स से ऑल से समझो 5 ml हाइड्रोजन, 5 ml हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकल रहा है, कोई खेल नहीं है. हाइड्रोजन फ्रॉम 10 ग्राम मेटल, तो 10 ग्राम मेटल 5 ml हाइड्रोजन. व्हाट इज द डेफिनेशन? फिक्स. ये फिक्स का बड़ा चक्कर है, इंपॉर्टेंट. तो 22400 से जो भी मेटल है से जुड़ी हुई whatever value is gram equivalent of that metal. Focus again is metal. So we can make formula in terms of hydrogen gas, of hydrogen gas for a metal. क्या होगी फॉर्मूला? Find it out. 10. So it is metal weight. You'll find in all formula similarity. Every time it was metal weight, you see those formula. So here also metal weight. Whatever. Into what is your fix here? 22400 if it is ml. Otherwise liter dm cube accordingly. Fix, constant. Upon what? Hydrogen liberated. H2 ml liberated from reaction. This is your formula. For this calculation will give equivalent weight of that particular metal which is under consideration. So this is one more approach.
Okay. Are you observing since last 1 hour or whatever that equivalent weights are in different forms? Let's proceed. Value comes same. Value comes same. So I hope this is understood. Title दीजिए. See capital next now. So I am giving new understanding, useful valencies. Useful. There can be more than this, but let's take up useful valencies. Alright? Chale. +1, +2, +3. As I said, useful only. Some different names only I'll title, otherwise H hydrogen, silver plus NH4 plus we call it ammonium. This is silver, yes. Cu plus we call it cuprous. Valencies, useful valencies. H plus, Ag plus, Na plus, Li plus, lithium, rubidium plus, cesium plus. These are plus values. Alright. +2, calcium +2, zinc +2, magnesium +2, Mn +2, barium +2, beryllium +2, like this. Yes, cupric, copper में +2 भी है. +1 it is cuprous, +2 it is cupric. Fe +2 it is ferrous. Strontium +2, strontium +2, like this. Ni +2 it is nickel +2. Some more will come with the studies. ये कोई एक छोटा सा लॉट दे रहा हूँ जो ज़्यादा काम का है. You will realize इसके अलावा है भी नहीं, कभी तो भी कुछ कोई आ जाता है. Pb +2 it is lead, प्लम्बस कहते हैं +2 के केस में, like this. Yes, it is Cr +2, it is क्रोमस, क्रोमस कहते हैं, क्रोमियम. Yes, so it is magnesium, zinc, calcium, nickel वगैरह. डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बहुत सारी वेरिएशन है, वो जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है तब लेंगे. +3 एल्यूमिनियम, +3 आर्सेनिक, +3 ऑरिक, +3. जहाँ अलग नाम है वहाँ लिख दो. इट इज ऑरिक +3. Fe फेरिक बन जाता है. +2 हो तो फेरस है, +3 हो तो फेरिक हो जाता है. सो सिंपल. रिमेंबर देम is important. Although it takes little time. I mean, it takes time to remember, but every time when you use, every time when you recall, वो अपने आप तैयार हो जाता है. हम तैयार नहीं करते. अच्छे अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स डोंट प्रिपेयर ऑल दिस. समझो रे बात को. छोटी छोटी कीमतें चुकानी है बड़ी बड़ी खुशियों के लिए. नाउ इट इज -1, it is -2, it is -3. You will need only +1, +2, +3. You will need only -1, -2, -3. -1, yes, there you will find many. Hydrogen comes in both. If it is -1, it is hydride. And if it is +1, it is hydrogen. Know this difference. If it is +1, it is hydrogen. If it is -1, it is hydride. Yes, all halogens, fluoride, chloride, bromide, iodide. Fluoride, it is chloride, it is bromide, it is iodide. ये एक कैटेगरी में आता है. You know, this comes in category. You add calcium also here. This ऐसे याद आते रहता है. Add calcium also like this. Okay.
चले, -1 की बातें चल रही है। H यानी बाय HCO3 माइनस, HSO3 माइनस, HSO4 माइनस। So it is bicarbonate, bi यानी H, it is bisulfite, H means bi, it is bisulfate, H यानी बाय, सिंपल सी बात है। सो इसको एक कैटेगरी में ले लो टू अंडरस्टैंड। NO2 माइनस, NO3 माइनस, NO2 माइनस is nitrite, NO3 minus is nitrate. It comes again in one class, so it is easily understood. ओके, कुछ याद आती रहेगी। ये प्राइमली रिक्वायर्ड है, सो कुछ छूट जाती है, कुछ जो ज़्यादा काम की नहीं होती है, हम भी उसको ज़्यादा बॉदर नहीं करते, टू गिव एंड टू रिमेंबर ऑल्सो। -2 S -2 SO3 -2 SO4 -2। सल्फर की 3 कैटेगरी, इट इज सल्फाइड, ओनली सल्फर हो तो, इट इज सल्फाइट, and it is sulfate. Know the spelling well? So सल्फर की एक कैटेगरी ले ली मैंने। It is chromate -2, it is dichromate -2. So it is एक कैटेगरी ले ली मैंने, it is chromate, it is dichromate। -1 में एक और ले लो, क्लोरेट, इट इज क्लोरेट। बाकी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं लूँगा तो भर भर के और भी आती रहेगी, बट दे आर लेस यूज, रेयर यूज, दिस आर मेन। सो मास्टर दिस नीड्स। सो इट इज क्रोमेट, इट इज डाइक्रोमेट। सल्फर की एक ले लो सिलिकेट्स, SiO3 -2, silicate, HPO4 -2, H and bi again, biphosphate, like this, sulfur, chlorine, sulfide, carbonates, CO3 -2, carbonate। सो ये नेगेटिव वैलेंसियाँ हैं, कभी याद आती रहेगी तो देते रहूँगा। यस, नहीं भी आप समझ ज़्यादा ले पाए तो भी ये ज़रूरी दे दी मैंने ऑलरेडी। P -3, PO4 -3, P is phosphide। आई एम सॉरी, मैं यहाँ थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली लिखूँगा। कहाँ भागी जा रही है ज़िंदगी? सो नहीं गए ना? मेरा ध्यान नहीं है, थोड़ा सा नैप ले लो बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं। तो -3 की कैटेगरी में P -3, PO4 -3, ASO4 -3, like this, it is phosphide, it is phosphate, and it is arsenate, it is N -3 nitride। This is what you need। O -2 ले लो, ऑक्साइड, देखिए याद आते रहता है, ऑक्साइड O -2, like this, valencies। We'll proceed further। चलिए, we saw in our session 1, how to make formula of ionic compounds, making of formula, not to remembering them, making a formula of all ionic compounds in millions।
compounds. Although we have taken this, but okay. -1 में एक और ऐड कर दो, OH minus, please, hydroxide. As I said, I'll keep remembering small thing, little left out. Add OH minus in hydroxides, -1 category. Yes, making of formula in ionic compounds. Recall two rules. In session 1. Yes. If valencies are equal, join them. If unequal, put them in cross position. Cupric sulfate. Cupric is Cu plus 2, sulfate is SO4 minus 2. Formula becomes CuSO4. I am not taking big one. I am not taking very large numbers. Cupric sulfate. Yes. Aluminium nitrate. Now you got valencies with you. Play with it and feel confidence. Aluminium nitrate. Aluminium is +3. Nitrate is NO3 -1. They are different. Put them in cross position. NO3 thrice.